Good afternoon, students. Keep silence. What is going on there? Board is visible to you. Students, give response. Board is visible. Voice is clear. Ina. Okay. No one is giving response now. I am giving the explanation now. Explanation was going on. Okay, do it. Have you read the book? Read the chapter? Whatever I have explained, have you read that chapter? पढ़ा था उसको घर पर? Whatever I have explained, is that clear? Is that clear? So what was in the chapter that there were two disabled persons? Now that is Stephen Hawking, and second one is Rudolf Ganga. Okay. So what he is saying, they are disabled or differently abled.
God have given them some different qualities. Okay, so that Firdaus Sanga has gone to London and he wants to visit that whom? Stephen Hawking. He wants to visit Stephen Hawking. Okay, and who was that? Stephen Hawking. A great scientist, a very renowned scientist, and he has gone there to take his interview, and his PA means his assistant had given him half an hour. When he has gone there, he has taken his interview and he has given the description his physical appearance. ना it was not very good. उनका जो physical appearance था वो बहुत ही अच्छा नहीं था. तो क्या कह रहा है वो? तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो बॉडी थी बहुत ही क्या थी, थिन थी. जैसे लग रहा है कि उनकी जो अपर पार्ट की बॉडी है, किस शर्ट में, ब्लू शर्ट में ना, ब्लू शर्ट, पेल ब्लू शर्ट में क्या हो गई है, सिंक हो गई हो, डूब गई हो. उनका जो हेड है वो क्या है, एक साइड पर झुका हुआ है, इंक्लाइन. ओके, एंड उनके जो लेग्स है ऐसा लग रहा है वो वेस्टेड है. देयर इज नो यूज ऑफ हिज लेग्स. एंड ही इज नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो. ही इज sitting in the wheelchair and there are some buttons on the wheelchair, and whenever he wants to speak he punch the buttons and that word flashes on the screen which on the computer which is attached to his wheelchair. Okay, and whenever he is saying that whenever I am asking question then I feel that he is feeling lots of pain in giving the answer, and I can feel his anguish. Anguish means pain. I can feel his pain. तो उसकी बॉडी को उन्होंने किससे कंपेयर किया? एक लैंटर्न से. क्या कंपेयर किया? एक लैंटर्न से. तो क्या कह रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि his body is looking like a lantern, जिसमें क्या है, there is a light and outside of lantern is very क्या, destroyed. It is very destroyed. But what is important for us? The light of the lantern. हमें उसकी आउटर बॉडी को नहीं देखना है, बल्कि उसके अंदर जो लाइट है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, we have to see that, and that is important thing, not the outer part, boundary of the lantern. Similarly, poet's bodily structure is not proper. His body's physical appearance is not good. So what is important for us? His inner beauty. जो उनकी inner beauty है, जो उनका inner talent है, वो हमारे लिए क्या है, important है. So we have to see the inner ability, inner talent, inner beauty of the scientist. क्या कहते हैं कि अगर हम उनकी फिजिकल बॉडी को देखेंगे तो देन वी विल अफ्रेड. बट हमें क्या देखना है? वी हैव टू सी द इनर टैलेंट, इनर एबिलिटी एंड इनर ब्यूटी ऑफ द साइंटिस्ट. सी हियर incandescence. Before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of man. Incandescence means inner glow or light. Now we have to see the inner glow, inner light of a man means inner beauty and inner talent of a man. I am watching that some students are laughing. What makes them laugh? The body almost irrelevant exists only like a case made of shadow, so that I, no believer in internal souls, know that this is what each of us is, everything else and accessory. The body almost irrelevant. जो body part है, जो structure है, outer body, वो क्या होता है? वो irrelevant होता है, means उससे उसका कोई यूज नहीं होता ना.
exist only like a case made of shadow. It is like a case. क्या है ये? केस है जो किससे बना है? शैडो से बना हुआ है. So that I, जैसे कि मैं भी हूं. ओके, नो बिलीवर इन इंटरनल सोल्स. जैसे कि मैं भी हूं जो इंटरनल सोल मीन्स इंटरनल ब्यूटी पे बिलीव नहीं करते, बल्कि किस पे बिलीव करते हैं? आउटर ब्यूटी पर. ठीक है. Know that this is what each of us is. कि हम लोग को क्या जानना चाहिए कि इंटरनल ब्यूटी इज द इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल ब्यूटी देन फिजिकल ब्यूटी. एवरीथिंग एल्स एंड एक्सेसरी. और जो और भी हर चीजें हैं वो क्या है? वो एक्स्ट्रा पार्ट है. हमारा जो मेन पार्ट है वो क्या है? हमारी इनर एबिलिटी है. और अदर जो भी चीजें हैं वो एक एक्स्ट्रा, वो क्या है? वो सब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं. ओके. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. क्या मैंने उनसे पूछा था? क्या क्वेश्चन था मेरा? What do you think is the best thing about being disabled? कि disabled होने में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? हाँ, क्या है आपके लिए सबसे अच्छा डिसेबल्ड होना? I don't think there is anything good about being disabled. Now Hawking is giving the answer कि if any person is disabled, then I don't think that there is anything good. कि उसमें कुछ अच्छाई है. अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है तो इसमें इसके उस पर्सन के लिए कोई गुड थिंग हिडन है. I don't think so. I said, do you discover how much kindness there is in the world? I said, मैंने क्या कहा? मैंने I said क्या कहा? I think, मैं ऐसा सोचता हूँ. कौन कह रहा है? फिरदौस कांगा. मैं ऐसा सोचता हूँ. Do you discover how much kindness there is in the world? क्या आप क्या डिस्कवर कर सकते हैं? Kindness of the people. How much kind the people are in the world. हाँ, वो कितने काइंड हैं? People कितने काइंड हैं? Yes, he said. हाँ, he means scientist. हाँ, said yes. It was a disadvantage of his voice. अब क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने yes कहा तो that was disadvantage of his voice synthesizer. वॉइस सिंथेसाइजर मीन्स वो जो मशीन है जो उनके लिए वॉइस का वर्क कर रही है, उस मशीन को क्या कर रहा है? वॉइस सिंथेसाइजर. दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन मीन्स राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस. नो शेड्स और टोन एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद. ठीक है, क्या कर रहा है कि जैसे कोई पर्सन जब अपना आंसर देता है तो हम क्या करते हैं? उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है या उसका टोन है या उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनकी आईज है, उससे हम ये समझ लेते हैं कि वो जो यस और नो कह रहे हैं तो उसमें उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितने वो फीलिंग से यस कह रहे हैं, कितने फीलिंग से नो कह रहे हैं. उनकी वॉइस का राइज एंड फॉल देख लेते हैं, उनके इंथुजियाज्म को देख लेते हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं. ठीक है. बट यहाँ पे जो उनका वॉइस सिंथेसाइजर है तो ये डिसएडवांटेज है मेरे लिए, क्योंकि मैं उनकी वॉइस के टोन को नहीं समझ पा रहा हूँ. ठीक है, कि वो जो अगर यस कह रहे हैं तो यस मीन्स वो कितने उत्सुक होके यस कह रहे हैं या नो कह रहे हैं तो कितने उत्सुक होके यस कह रहे हैं. बिकॉज आई कैन नॉट रीड हिज फेशियल एक्सप्रेशन. हाँ, उनकी बॉडी का एक्सप्रेशन मैं नहीं रीड कर सकता और उनकी वॉइस का राइज एंड फॉल आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट. क्या कर रहा था मैं अपनी चेयर पे शिफ्ट हो रहा था, अपने रिस्ट को टर्न कर रहा था टू वॉच द टाइम, बिकॉज दैट सेक्रेटरी दैट he has given me, assistant had given me half an hour.
So I wanted to make every one of our 30 minutes count. Now I want to make every 30 minutes, every one of 30 minutes. मीन्स जो 30 मिनट्स के एवरी मिनट है उनको मैं क्या करना चाहता था, मेमोरेबल बनाना चाहता था. सबको मैं काउंट मीन्स हर एक मिनट में मैं कुछ उनसे अचीव करना चाहता था. ठीक है. I feel a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. हाँ? क्या कह रहे हैं? Exhilaration means very happy. मैं जो भी अपनी बॉडी से मूवमेंट कर पा रहा था उससे मैं क्या हो रहा था, बहुत ही मुझे रिलीफ मिल रहा था और मैं बहुत ही हैप्पी था. आई फील हैप्पी ऑन माई बॉडी मूवमेंट. क्यों ऐसा कह रहे हैं? बाय because he is also disabled, but in front of him there is scientist and who cannot move properly, so he feel lots of relief and happiness. क्यों? क्योंकि वो साइंटिस्ट तो वो भी नहीं कर पा रहे थे, तो उनको देख के उन्हें अपनी जो डिसेबिलिटी थी उससे रिलीफ महसूस हो रहा था. ठीक है. How little it mattered then that I would never walk or ever stand. How little it mattered. अब ये क्या कर रहा है? ये बहुत little matter करता है, बहुत small matter करता है कि I would never walk or ever even stand. कि I cannot never walk or stand. अब मेरे लिए लिटिल मायने रखता है. क्यों? क्योंकि मैं अपने सामने अपने से भी ज्यादा डिसेबल्ड पर्सन को देख रहा हूं कि कम से कम मैं मूव तो कर सकता हूं. एटलीस्ट आई कैन मूव, एटलीस्ट आई कैन ट्विस्ट माई हैंड. सो आई एम फीलिंग लॉट्स ऑफ रिलीफ. I told him how he had been an inspiration beyond clinch for me. Clinch is a phrase or idea used so often that it loses its meaning. I told him how he had been an inspiration for me. क्या कहा मैंने? कि वो मेरे लिए क्या है? एक इंस्पिरेशन है. कौन? स्टीफन हॉकिंग. And surely for others, and he is also an inspiration for others also. Did that thought help him? Did that thought help him? क्या ये जो मेरी thought है कि he is inspiration and he is the inspiration for other people also, did that thought help him? Means did that thought makes him happy? क्या वो उन्हें make him happy? क्या वो उन्हें happy बनाएगा? No, he said. And I thought how foolish I was to ask. उन्होंने क्या कह दिया तुरंत? No. और अब वो क्या कह रहा है कि how foolish I was when I thought. जब मैंने ये सोचा तो मैं कितना foolish था. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrow day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. Claustrophobic means very small and sophisticated. Okay? तो क्या करें? No. When your body is a claustrophobic room and the walls are going narrow day by day. क्या है? जब आपकी बॉडी sophisticated है, small है, narrow है और आप ये जानते हैं, you know that day by day this wall is becoming narrow. तो क्या होता है? It does not do much good to know that. Then it does not give you any pleasure to know that. ये जानकर आपको खुशी नहीं होगी. क्या जानकर? That there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. कि people outside, जो people है वो आपको जिंदा देख के खुश हो रहे हैं, आपको admire कर रहे हैं. They are admiring you. They are feeling happy on you. But
but it does not matter for me because I am not feeling good and I know day by day my body is becoming narrow. Huh? Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better? अब क्या करें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनका क्या है? Did you give? Is there any advice? Do you want to give any advice to the disabled people which can make their life better? आप कुछ एडवाइस देंगे डिसेबल्ड पीपल को? आप देना चाहते हैं जिससे उनकी लाइफ कुछ बेटर हो सके, तो क्या करें? They should concentrate on what they are good at. उन्हें क्या करना चाहिए? They should concentrate what they are good at. उन्हें अपनी एबिलिटी, जो भी एबिलिटी है, जो भी टैलेंट है, उसमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकते. ओके, देन I think things like the disabled Olympics are a waste of time. Disabled Olympic is a waste of time. In my opinion, disabled Olympic is a waste of time. I know what you mean. I remember the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was. ठीक है, क्या कह रहा है? I know what you mean. अब क्या कह रहा है वो फिरदौस खांगा? कह रहा है I know what do you want to say ना? क्या? I remember the year. अब अपनी वो ईयर रिमेम्बर कर रहे कौन? फिरदौस खांगा ना? Years I had spent trying to play a Spanish guitar ना? I spent trying to play. The years I had spent to trying to play a Spanish guitar considerably. Considerably means with great enthusiasm. Huh? Larger than I was. Huh? I have spent lots of years in learning to play Spanish guitar which was larger than me. Huh? फिर क्या हुआ? And how gleefully I had unstringed it one night. And how gleefully means happily. How happily I have unstringed means I have broken all the strings of the guitar one night. ठीक है? The half hour was up. Half hour क्या हो चुका था? Up. It is over. ना? I think I have annoyed you enough. I said grinning thank you for. मैंने मुस्कुराते हुए हंसते हुए क्या कहा? I think I have annoyed you enough. I have troubled you enough. Thank you for. Stay. I waited. Have some tea. I can show you my garden. फिर स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा? Stay. रुको. I waited. हाँ, मैंने क्या किया? वेट किया. Have some tea. I can show you the garden. I can show you my garden. The garden was as big as a park. But Stephen Hawking covered every inch rambling along in his motorized wheelchair while I dozed to keep out of the way. क्या किया उन्होंने? स्टीफन हॉकिंग covered every inch of his garden on rambling his motorized wheelchair. उनके व्हीलचेयर में क्या था? मोटर लगी थी ना, तो उसी पे चलते हुए उन्होंने क्या किया? रैम्बलिंग में, वो रैम्बलिंग क्या साउंड है? साउंड, हाँ, जो मोटर से चल और वो व्हील चेयर के चलने पे जो साउंड आ रही है ना, द वॉइस, दैट वॉइस इज कॉल्ड रैम्बलिंग. तो उन्होंने उस पे चलते हुए क्या किया? ही कवर्ड एवरी इंचेस इन द गार्डन. आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, एंड डॉज मीन्स आई मेड अ क्विक मूवमेंट टू गिव हिम अ पाथ या गिव हिम अ वे. We could not talk very much. The sun made him silent.
In the past, we could not talk very much. Why? Because the sun made him silent. Why sun made him silent? Why? The letters on his screen disappearing in the glare. Glare means shine. Whatever he wants to talk, तो क्या करते थे वो जो उनकी स्क्रीन पे वर्ड फ्लैश होते थे ना, तो because of sunlight, I am not able to see the screen very properly. Words are not properly visible. Okay? And our letter we were ready to leave. And our letter we were ready to leave. I did not know what to do. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. Now, I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. He was also on the wheelchair now. Wheeled out in the summer evening. I looked back and I knew he was waving though he was not. I looked back. मैंने पीछे देखा and I knew he was waving but he was not there. ना क्या कर रहा था कि वो अपने पीछे से हाथ हिला रहे होंगे but he was not there. Watching him, an embodiment of the bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I know that my journey was over for now. Watching him, an embodiment of my bravest self. उनको क्या कह रहा है? Embodiment of my bravest self. Embodiment है मगर क्या है? Brave है. He is the bravest man in the world. The one I was moving towards. जिनके पास मैं गया था. He is the person I went to him. The one I had believed in for so many years alone. जिन पे मैं बहुत सालों से क्या करता था? Believe करता था. I knew that my journey was over for now. And for now my journey is over. Whatever his metaphor for London, that was Cambridge to meet Stephen Hawking. Now I have met Stephen Hawking. Now my journey is over for now. अब की जो जर्नी थी वो क्या हो गई मेरी? अब ओवर हो चुकी है. जो मेरा ड्रीम था to meet Stephen Hawking, that is completed. Now you read whole chapter, all of you. Is it clear? Is it clear? Okay, now read whole chapter once again and make 10 additional question answers. Hard words and additional question answers. सुन रहे हैं? Write 10 homework है आपका. That is homework. Hard words, 10 additional question answer. It may be more than 10 but not less than 10. Okay? Okay, maybe more than 10 but not less than 10. Okay? Firstly you write these two things. Where is your book? Read. Write homework. Matic book. मैम ले गए
If any problem, then you can ask. If any problem, you can ask. Foolish means बहुत ही stupid idea. Stupid. This is your homework and this should be done in your copy yesterday. Okay? All of you read whole chapter again and make sentence, make that questions also. Any problem, students? Ina, Achyut, Muhammad, whatever name is. Now your time is over. Your class is over. Bye. Take care. Have a nice day. Any problem you can ask.